So, do you feel like getting somebody's support when you are in trouble, or you are finding your tasks to be a bit tough? Here is what we are going to do. Hi, I welcome all whoever is there in YouTube and also whoever has joined here in Facebook. So welcome, Steve. You can turn on your video so that we can speak together. Enlist support. How do you do that? The first is one reason sports were always a big part of my life was that they gave me a sense of community. Having a team to support me equipped me to stand strong in the face of adversity. When challenges came, I had teammates to lift me up even as I lifted them up to achieve our goals. When I left sports, I missed that support until I found CrossFit. Then I started going to the gym 4 or 5 days a week because I got that feeling of accountability again through being in a group of people going through the same workout together. Not only was a coach guiding and supporting the class, but all my peers encouraged and supported one another to keep moving forward. As a result, CrossFit really helped me stay accountable to my health goals for many years. No matter if your goal is in the area of business, relationships, or wellness, accountability and support are the magical keys and can make the difference between success and failure. When I think of accountability, I see, not surprisingly, three levels: accountability to yourself, accountability to someone else, accountability to a community. Accountability to yourself. The first level is the personal pride and integrity of holding yourself accountable. Most people overlook the value of this level because they undervalue themselves and discount their own voice and personal pride to keep their own commitments. But when you learn to appreciate you are right now and who you are becoming, you can leverage your personal integrity to value and keep your word. Are you shaping your identity around your individual integrity? In other words, are you a person who says, I'll do this thing and then does it? Or are you a person who says one thing and does another, particularly when it is for yourself? Your word to yourself is everything. When you keep it, you build self esteem, self confidence, and self love. Imagine being able to say to yourself at the end of each day, I am proud of myself for doing what I said I was going to do. That is the accountability of personal pride and your integrity at work. That should really be the foundation, but life happens, challenges happen, responsibilities happen. This is where the other two levels come in. Accountability to someone else. I like to call this person an accountability buddy. It could be a friend, partner, spouse, coach, or another professional of some sort. For example, if you and a friend both want to commit to being more active, maybe you walk together every morning. The point is that you have enlisted their support specifically to hold you accountable for taking the next step to achieving a goal. On those days when you struggle to act,
based on a sense of personal pride and integrity, and we all have those days. This person can support you and hold you accountable to continue taking action. While explaining accountability and why it works, Katie Milkman introduced me to the concept called commitment devices. किसी और के साथ committed हो जाओ, commit कीजिए कि you will do this thing, and whenever you commit, वो कीजिए किसी के साथ भी, और हेल्प कीजिए किसी और को वो करने की. सपोज आप दोनों का एक बिजनेस करने का मन है. लेट अस अचीव 5 lakhs टुगेदर. सो व्हाट नीड्स टू हैपन, वो जो है आप दोनों बैठ के एक लिस्ट बनाएं. व्हेन यू डू दैट लिस्टिंग, अब वो उसमें से कुछ प्रैक्टिकल होगा, कुछ इम्प्रैक्टिकल होगा. इम्प्रैक्टिकल कब होता है? जब आप उसके लिए कैपेबल एनफ नहीं बने हुए होते हैं. देन आपको लगता है कि यूं ही आपने उसमें लिख दिया है. बट स्टिल अगर आप उसमें लिखोगे कि हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दिस, कैसे होगा ये, जो भी होगा, जैसे कैसे भी करेंगे, देन वो धीरे धीरे होते जाता है. फर्स्ट स्टेप आपको तो लेना ही पड़ेगा. वो फर्स्ट स्टेप लेने की अकाउंटेबिलिटी भी आपको रखनी पड़ेगी किसी के साथ. और अगर उसके साथ नहीं होता है, मतलब ये अकाउंटेबिलिटी ना उनका है ना आपका है, तो आप क्या करोगे? एक कॉन्सिक्वेंसेस रखेंगे, कमिटमेंट डिवाइस, कि अगर नहीं किए तो व्हाट पनिशमेंट और पेनल्टीज यू विल गिव. We are all used to having to comply with limits placed on us by others. Think speed limits and the fines that come from exceeding them. But we also seem to respond well to limits and consequences we place upon ourselves. When you give permission to someone to hold you accountable, you have created a commitment device that either implies a penalty of embarrassment or shame by letting someone down, or actually delivering some sort of consequence you would prefer to avoid. When I was at my lowest point without a job, recovering from an injury, doubting myself completely, both my sister and my brother gave me this incredible gift of accountability. My sister said, "Okay, Louise, you have been here sleeping on this couch long enough. It's time. You either move out or start paying rent." ये अगर कोई हम में से होता तो हम क्या करते कि मेरी बहन ने ऐसे बोला तो दूसरे क्या सपोर्ट करेंगे, राइट? हाउ यू टेक, आपका माइंडसेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलोगे. Initially, I thought I could just move to my brother's couch, but he told me the same thing. It was only $250 a month, but it forced me to make plans, make money, and make stuff happen in order to pay the rent to them. If I didn't make rent, I would fail, and my siblings would know it. That the potential embarrassment and consequences outweighed the discomfort of anything that might come from taking a risk. So I got busy. आपके जिंदगी में भी वो पोटेंशियल रिस्क और एम्बैरेसमेंट आता है, आप कैसे लेते हैं? वो एम्बैरेसमेंट का सिचुएशन आता ही क्यों? क्योंकि आप इस लेवल पे आपको होना नहीं है. यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. 10 लेवल अगर आपको जाना है, क्या होगा आपके साथ? यूनिवर्स क्या करेगा आपके साथ? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? आपको ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा जिसमें आप प्रूव ही नहीं कर सकते, और आप खुद को डिसाइड प्रूव मतलब बता ही नहीं सकते कि व्हाई यू कैन नॉट जस्टिफाई कि आप यहाँ पे क्यों हैं, राइट? वो सिचुएशन आता है. आपकी मर्जी, आप एम्बैरेसमेंट लेते हो या फिर कुछ करने का डिसीजन लेते हो. हाउ डू यू मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल? कभी कभी ये भी तो दिमाग में आता है कि मैं भी दिस इज ए सिचुएशन टू लर्न माई लेसन. वो भी हो सकता है. यस, क्वाइट फाइन. अगर आपका ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, then maybe this is the thing that the universe is giving, and
You learn how to, मतलब आप सीख रहे हैं कि हाँ अपने स्ट्राइड में कैसे लेना होता है चीज। मतलब कब तक उस स्ट्राइड में जो हम लेते हैं वो कब तक लेना होगा, आज नहीं तो कल। यू नीड टू ग्रो अप एंड आर यू डूइंग द थिंग्स दैट यू वांट टू डू बाय टेकिंग थिंग्स इन योर स्ट्राइड। बिगर गोल को अगर आप सामने रखेंगे देन आप आपके अपने डिफीट्स इतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होंगे, इतना ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। सभी कोई बोलेंगे दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बट अगर रिपीटेडली हो ये बातें और आप सोचो ना, आप बताओ ना खुद को, इज दिस वर्थ डूइंग इट? क्या ये लोग आपको डिजर्व करते हैं? अगर कभी भी अगर आपको ये लगा कि ये लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं, देन यू नीड टू मेक ए प्लान। अब ये प्लान कैसे बनाओगे, उसके कई सारे तरीके, राइट? एक तो कम्युनिटी है, आपके पास 3-4 लोग क्या ऐसे हैं, या फिर 10-12 लोग, या फिर 40-50 लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपका गोल क्या है। पहले तो पूछ लेगा कि आपका गोल क्या है। अगर वो गोल आपके लाइफ में सूट नहीं कर रहा है, देन दे विल आस्क यू टू टेक एक्शन। क्या आपने ऐसा किसी को अकाउंटेबल रखा है? क्या कोई आपको बता सकता है कि डू दिस डू दैट? क्या आप उसके सजेशन लेते हो कंस्ट्रक्टिवली? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्लीजिंग नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको। अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी टफ जॉब। आपको वो पूछ रहे हैं कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, वो कभी प्लेजेंट थोड़ी ही हो सकता है। तो क्या करेंगे उसका? The point is acknowledging that we are at the heart of it community beings who respond well to positive peer pressure. When we know that others counting on us, skipping means we are admitting a lack of commitment to the others. दूसरे को आप बता नहीं सकते जो आपके वेल विशर हैं, अगर आप उनके सजेशन नहीं लेते हो, देन आप उनको तो फेल करते ही हो। उसके रिजल्ट में क्या होता है, आप भी फेल होते हो ना, राइट? According to productivity expert Thomas Frank, a subgroup within community accountability is accountability to a team where group success depends on your performance. It can be your business partners, co-workers, or even family members. Team accountability can be especially intense because you not only have to admit your failure to the group, but your failure is their failure. This is why challenges are so effective when done with a community, especially when tied to team success. For example, you might engage in a 30-day weight loss challenge with a team of people who experiences a shared reward for success or suffers some sort of shared consequences for failure. The shared team effect becomes a powerful motivator for everyone to step up and help the team experience a shared win. Harnessing the power of community can give you the edge in achieving your greatness goals. Here are a few examples of how these levels work. When I played football, I had my own goals, such as scoring certain number of touchdowns in a season. I would push myself to achieve that goal. That is personal accountability. My coach was also there to hold me accountable every day of practice. If I didn't show up, or give 100%, there were consequences. I would have to run a few miles or maybe even ride the bench for a game. I didn't want to let the team down by not delivering my best. So that community support motivated me to keep moving forward. Another example is my relationship with my girlfriend.
My girlfriend is obviously very important person to give me feedback about whether or not I am staying on course. I first monitor my own feelings and do a self check to ensure I am being true to who I am and always acting with integrity. Then we have accountability check ins and share how we are both feeling. I get to see real time results based on any moment of how I show up with my relationships, with my emotional availability, my intimacy, my connection, and my presence. If that is off for a period of time, there is going to be a disconnect in my relationship. I also, कैसे होता है आप किसी को आपका रिलेशनशिप कैसे बनता है अब आज ही देखिए आई आई गॉट कनेक्टेड टू फ्यू पीपल और उनको मैंने कुछ देना है कि 30 मिनट्स का एक प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में मैंने उनको बताना था कि आप रिपोर्ट कैसे बनाओ तो मेरा रिपोर्ट आपका रिपोर्ट सेम तो नहीं हो सकता राइट आप कैसे मेरा काम आपका काम सेम तो हो नहीं सकता सो रिपोर्ट भी सेम नहीं हो सकते बट रिपोर्ट के एलिमेंट सेम हो सकते हैं अब सबको पता है कि रिपोर्ट में होता क्या है कि आपकी काम का प्रोग्रेस होता है एक तो आपके काम का प्रोग्रेस होता है दूसरा आपने क्यों वो काम लिया वो डिफाइन होता है सबसे पहले और फिर वो नहीं होने के पीछे अगर हुआ या फिर नहीं हुआ हुआ तो फिर व्हाट आर द रीजंस क्या क्या चीज की वजह से वो हुआ वो अगर आप लिख दोगे देन द सेकंड पर्सन कोई भी उस रिपोर्ट को पढ़ता है आज पढ़ता है या फिर कई दिनों के बाद पढ़ता है आपका सीनियर बॉस पढ़ता है या फिर कोई आपका जूनियर पढ़ता है क्योंकि इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट खाली ऐसा नहीं है कि आप अपने काम के बारे में बता रहे हो आप ये भी बता रहे हो कि ये काम को किया कैसे जाता है क्या अप्रोच आपने लिया तो अगर आप लिख दोगे कि ये अप्रोच आपने लिया है देन दैट बिकम्स एन अचीवमेंट राइट आप उसी लॉन्ग टर्म गोल के साथ अपने रिपोर्ट को अगर लिखोगे तो क्यों किया क्या अप्रोच लिया क्या सक्सेस था क्या नहीं काम किया जो आपने एज्यूम किया था एंड देन उसके बाद अगर फेल्योर था तो उसकी वजह से क्या था और व्हाट इज द नेक्स्ट टाइमलाइन आपने दिया हो किसी को क्या आप ये कर सकते हो ये अगर आप कर सकते हो देन आपका रिपोर्ट रेडी है लेकिन ये सिंपल सी बातें समझने के लिए कितना टाइम लगता है अगेन देयर आर टू थिंग्स एक तो आप एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए बनाते हो एक रिपोर्ट आप डिस्क्राइब करने के लिए बनाते हो प्रेजेंट करने के लिए जो बनाते हो वो सारा कुछ पीपीटी में अगर होगा तो लोग आपको सुनेगा कि पढ़ेगा सो आप हमेशा उसको एक हिंट दो पीपीटी में और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन कैसे करोगे वो एक आप डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो प्रेजेंट करने के बाद सभी कोई रेफरेंस करने के लिए आएगा राइट सो यू डू दैट